Grammar. Grammar is a subject that a lot of learners aspiring to Learn English, or even experts who are good in the field of English communication, have a problem with. So today I'm going to show you the fastest way to learn entire English grammar. So, my name is Rajat Nair. I am a TEFL certified English trainer at BM English Speaking Institute. So let's get the show started. Now, before we indulge and I'll tell you about the fastest way to learn grammar, let's look at some of the most common problems that I have heard from all my learners. The first thing that they tell me is, English grammar is too complex. Sir, पता ही नहीं चलता, I had to किधर डालूं, I have to किधर डालूं, had been किधर आता है, have been किधर आता है. It's a thing that I hear from my learners on a daily basis. The second problem that I hear from them is, it takes too much time to learn. Sir, फटाफट grammar सिखा दो ना. हमको इतना time, इतना concept याद नहीं रहता sir. फटाफट सिखा दो please. So that's another problem. The third problem is, learning grammar is boring. I know, grammar has a lot of rules. For some, it's almost like mathematics. I always found mathematics very boring. But for a lot of people, grammar is just like that. कि सर ग्रामर सीखना इतना बोर होता है, इसको मजेदार बनाओ, इसको इंटरेस्टिंग बनाओ, ये कैसे, मुझे मजा नहीं आ रहा ग्रामर सीखने में. That is another concern that a lot of learners have. And finally, sometimes it is confusing. सर बहुत कंफ्यूज होता है, ये रूल्स इसके ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, इसके ऊपर ये, इसके नीचे ये, इसके बाद ये, क्या कब किधर लगता है सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा. So that is exactly why we have designed this webinar for you, and I'm going to show you what is the fastest way of learning English grammar. So you must be wondering, what is it? क्या है सबसे तेज तरीका पूरा ग्रामर सीखने का? Well, let me reveal the secret to you right away. The fastest way of learning English grammar is by finding an expert. Now, how do you figure out who's an expert in English grammar? Well, expert वो इंसान है जो आपको वो टॉपिक एकदम आसानी से और सिंपल करके सिखा सकता है. अगर आप किसी के पास जाओ और वो ग्रामर सीखो और वो ग्रामर आपको इजीली समझ में आने लगे या फिर बहुत मजेदार लगने लगे, तो आप समझ जाओ कि you already have found an expert. That is how you learn any subject. Here we are talking about grammar. So let's quickly get this show started. And one more thing, I'll give you one more reason why you should watch this video till the end. Because I want you to give me the feedback on whether I am an expert in teaching you grammar or not. So I am going to show you the fastest way to learn entire English grammar. So what do I mean when I say entire English grammar? Well, as you can see on the screen, grammar has four main pillars. That is, parts of speech, sentence structure, tenses, and punctuation. So let's start with parts of speech. Now, before we begin that, I want to tell you that there is an exciting offer for you if you stay till the end. One of those offers are that you get to download this PPT totally free of charge at the end of the webinar. So I will be sharing the link with you at the end. Plus, I have some more exciting offers for you. So please stay on with me and make sure that you take complete advantage of these offers. Now, as I said before, first we will be learning parts of speech. Why are we learning parts of speech? Well, parts of speech आपको ये बताता है कि इंग्लिश में हर शब्द का क्या function है. Every word in English has a function. And parts of speech tells you what each word stands for. हर एक शब्द का क्या function होता है. So let's learn parts of speech using some examples. As you can see, the first example you have in front of you is, Hooray! Paul practiced very hard. Hooray! Paul ने बहुत मेहनत से practice की. Now, let's dissect these sentences
these words and look at it one by one. So the first word that we have is hooray. What is hooray? Hooray is an interjection. An interjection is a word that you use to express sudden emotions like sudden happiness, sudden sadness. Just say, wow, ouch, oh my God. These are some of the examples of interjections. They are usually in the beginning of a sentence and are often followed by an exclamation point. Ek exclamation mark hoga. So that is how you can also identify an interjection. Our next word is Paul. Paul is a noun. A noun is a word that gives you the name of a person, place, animal, or thing. So your name, आपका नाम, आपके दोस्तों का नाम, Ramesh, Suresh, Dadar, me, my name is Rajat. Rajat is a noun. I work at BM English Speaking Institute. BM Institute is the name. So again, it becomes a noun. So that is how you identify nouns. Let's go on to the next word. Next word is practiced. Practiced is a verb. Now, verbs are action words. आप जो भी क्रिया करते हो वो सब words को हम verb कहते हैं. Easy or not so far? Okay then, let's move on to our next word. Very. Very is an adverb. An adverb describes the qualities of an adjective or another verb. So यहाँ पे very किसको describe कर रहा है? यहाँ पे very hard को describe कर रहा है. Now, what are the other words that you can use with very? You can say very confidently, very dedicatedly, yeah, very hard, very fearlessly. You can use all of these words along with very. And finally, coming to our last word, we use hard, that is an adjective. An adjective gives you the qualities of a noun. So Paul practiced very hard. Paul is a good boy. A good is the adjective here. Paul is a bad boy. Bad is the adjective here. So इस प्रकार आप adjectives की practice कर सकते हो. Next. The next sentence you can see on the board is, he spoke fluently in English. So let's begin with the very first sentence. He is a pronoun. Pronoun is that word जो noun के बदले इस्तेमाल किया जाता है. So some other common pronouns are I, he, she, it, you, we, they, etc. Our next word is spoke. What is spoke? Spoke is again a verb. क्यों? क्योंकि ये एक action word है. The next word is fluently. Fluently फिर से एक adverb है. ये adverb क्यों है? क्योंकि ये verb की विशेषताएं बता रहा है. तो उसने कैसे बात किया? He spoke fluently. इसके अलावा आप he spoke confidently, he spoke fearlessly, he spoke with a smile. ये सब सारी चीजें यूज कर सकते हो. Next, our next word is in. In is a preposition. A preposition is a word that gives you a location or a location and time. ज्यादातर preposition का काम ये होता है कि वो nouns को और वाक्य में दूसरे किसी वर्ड के बीच में एक संबंध बताती है, एक रिलेशन बताती है. तो यहाँ पे किसने इंग्लिश में बात की? पॉल ने. He spoke fluently in English. That's how you use prepositions. And finally, coming to our last word, that is English. English क्या है? That's correct. English is a noun because it is the name of a subject. That's exactly correct. Now let's see both the sentence that we practiced. Our first sentence was, hooray, Paul practiced very hard. And our second sentence is, he spoke fluently in English. Ab, there is just one part of speech remaining. We will learn that by combining these sentences. चलो इन दोनों sentences की शादी कर देते हैं. शादी कैसे कराएंगे हम इनकी? We will use a conjunction that is and. So what are conjunctions? Conjunctions वो words होते हैं जो एक से ज्यादा वाक्य को साथ में जोड़ देते हैं. तो ये वाक्य देखो कैसे बन गया. Hooray,
Paul practiced very hard and he spoke fluently in English. तो जो दो वाक्य थे वो एक वाक्य में समेट गया. So that is what conjunctions do for us. So देखते हैं हमने ये चार्ट में कौन से words, parts of speech सीखे. And we learned nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections. आसान है कि नहीं, friends? That's right. Now, आपने words का मतलब तो सीख लिया, but let me tell you, friends, the magic starts happening when you join these words and make proper sentences. इसीलिए तो grammar important है ताकि आप वाक्य बराबर बना सको. So that's when the magic starts happening. ये सारे शब्द को लेकर आप जब एक वाक्य, एक sentence बनाते हो. So I will tell you in the next 1 minute कि एक sentence, the most basic and simple sentence English में कैसे बनाया जाता है. So there you go. The most basic sentence in English is divided into 3 parts. पहला आता है आपका subject जो है कर्ता, दूसरा आता है आपका verb यानी क्रिया, और तीसरा आता है object यानी कर्म. तो जो कर्ता क्रिया करता है उसका कर्म होता है object. As simple as that. So if I have to give you an example using a subject, verb and object, I will say, I dance every day. As simple as that. आसान है कि नहीं? He speaks in English. That is all it takes. है कि नहीं आसान ये? Exactly. Now, अब हम सीख चुके हैं, गए 10 मिनटों में हमने ये सीखा कि इंग्लिश में हर एक शब्द का क्या फंक्शन होता है और उस शब्द को एक ऑर्डर में कैसे डालें ताकि ये एक वाक्य बना पाए. Next, we move on to our most important topic, that is tenses. तो ये करने से पहले चलो let's take you into our classroom at BM Institute and I will show you how they learn English in our BM classrooms. So please enjoy. Here you can see one of our expert trainers teaching grammar in the class. Students सभी सर्कल में खड़े हैं, अपने ग्रामर बुक से सभी एक्सरसाइज सॉल्विंग कर रहे हैं. स्टूडेंट्स खुद एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं. In this photo, you can see our learners taking down notes from the experts who are sharing the information. Here, there is a student who is speaking and demonstrating her skills in grammar. So, when you come to our class, you not only learn, but you also speak and demonstrate what you know. And finally, these are our learners having fun in our class. So, I hope you had fun, and I hope that was a quick, enjoyable tour to our class. Now, let's come to our topic. So, अब हम क्या करने वाले हैं? Pay very close attention, friends, because in the next 9 minutes or 10 minutes, I'm going to explain tenses to you. And मैं आपको बताऊंगा, मैं प्रूव करूंगा कि tenses सीखना और tenses में वाक्य बनाना कितना आसान है. So, are you ready? All right. So, as you can see in front of your screen, there are 3 main types of tenses: past tense, present tense, and future tense. चलो देखते हैं इनको एक एक करके लेके इनमें कैसे वाक्य बना सकते हैं. So first, past, present और future का first type है simple tense. Simple tense यानी सामान्य काल. The first example that I'll give you in past tense is I wrote an email. हम सब ईमेल लिखते हैं. आप शायद एम्प्लॉय हो या आप कोई स्टूडेंट हो, सभी को ईमेल कभी ना कभी लिखना पड़ता है. तो I wrote an email, इसको आप हिंदी में कैसे बोलोगे? You will say, मैंने ईमेल लिखा. That is the classic example of a simple past tense. सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको कोई चीज जो भूतकाल में घटी हो उसके बारे में बात करनी हो. That's when we use simple past tense. So इसी तरह I, we, you, they, he, she, it wrote an email.
Moving on. Let's say I write an email. इसको आप हिंदी में कैसे बोलोगे? You say, मैं ईमेल लिखूंगा. मैं ईमेल लिखता हूं. That is another example of a present simple tense, यानी सामान्य वर्तमान काल. प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको कोई चीज वर्तमान काल में बोलनी हो, जो अब हो रही है उसके बारे में बोलना हो, तब we use simple present tense. So it's I, we, you, they write an email, and he, she, it writes an email. Coming to our next tense, future simple tense. I will write an email. How will you translate this in Hindi? You will say, मैं email लिखूंगा. That means आपने अभी तक लिखा नहीं है, आप भविष्य में लिखने वाले हो. So that is another example of a future simple tense. जो भी चीज आप भविष्य में करने वाले हो, उनके बारे में बात करने आप यूज करते हो future simple tense. So I, we, you, they, he, she, it will write an email, will talk in English, will do my homework. ये सब examples हैं future simple tense के. Now, we have finished simple tense. I'm sure that was very easy. Now let's move on to our another tense. Tense क्या एक दूसरा प्रकार है continuous tense, यानी अपूर्ण काल. So first of all, let me directly begin with an example. मैं ईमेल लिख रहा था. इसको आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? You will say, I was writing an email. आप ये है एक एग्जाम्पल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का. इसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें कोई क्रिया हमने भूतकाल में शुरू की हो और वो खत्म नहीं हुई. That's when we use a past continuous tense. So इसी प्रकार आप बोलोगे I, she, he, it was writing an email, and we, you, they were writing an email. आसान है कि नहीं? Okay. Next, we come to present continuous tense, यानी अपूर्ण वर्तमान काल. Let me give you the example. I am writing an email. इसको आप हिंदी में कैसे बोलोगे? मैं एक ईमेल लिख रहा हूं. जैसे आप इस वक्त वेबिनार देख रहे हो, so you will say I am watching a webinar. So ये हुआ एक perfect example present continuous tense का. Present continuous tense का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप कोई क्रिया आपने भूतकाल में शुरू की हो और वो अभी भी चल रही हो प्रेजेंट में, क्रिया पूरी नहीं हुई. That's when you use a present continuous tense. So in that same manner, you will say I am writing, he, she, it is writing, and we, you, they are writing an email. Easy or not, friends? All right, let's move on and study the last continuous pattern, that is future continuous tense. Let me give you a sentence. I will be writing an email. इसको आप हिंदी में कैसे बोलोगे? मैं ईमेल लिख रहा होऊंगा. आपने अभी तक लिखा नहीं है, आप ना ही लिख रहे हो, बट आप भविष्य में लिखने वाले हो, तो आप बोलोगे I will be writing an email. That is an example of future continuous tense. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस उन चीजों के लिए यूज की जाती है जो आप भविष्य में शुरू करने वाले हो और वो एक्शन पूरी नहीं हुई हो. That is when you use a future continuous tense. I will be writing, we, you, they, he, she, it will be writing an email. So with that, we have also finished our continuous tenses, and let's move on to our final type, that is perfect tense. Perfect tense यानी पूर्ण काल. Now, perfect tense also has three types. So let's begin with the first type.
I had written an email. इसका मतलब क्या हुआ? मैं ईमेल लिख चुका था या मैंने ईमेल लिखा था. This is an example of past perfect tense. Past perfect tense का इस्तेमाल उन जगहों पे किया जाता है जब एक क्रिया भूतकाल में शुरू हुई हो और भूतकाल में ही खत्म हो चुकी हो. So in this way it is different from continuous. Continuous में क्रिया पूरी नहीं होती और perfect में क्रिया पूरी हो जाती है. So similarly you can also say we, you, they, he, she, it had written an email. Simple? All right. Let's move on to the next type. चलो आगे बढ़ते हैं. I will give you another example. You have to solve this. आपको ये हिंदी में ट्रांसलेट करना है कि I have written a letter. इसको हिंदी में करो. So यहां पे आप बोलोगे मैं लेटर लिख चुका हूं या मैंने लेटर लिखा है. This is a perfect example of present perfect tense. Present perfect tense का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप कोई क्रिया शुरू करते हो भविष्य में. मतलब आपने भूतकाल में आपने शुरू कर दी है भूतकाल में, बट वो क्रिया प्रेजेंट टेंस में इस क्षण में आके खत्म हुई है. So that's when you use a present perfect tense. So you can make some other sentences like I, we, you, they have written an email and he, she, it has written an email. Easy, friends? I hope I'm not going too fast. Okay. So we come to our last type, that is future perfect tense. मैं आपको एक sentence दूंगा, आपको ये translate करना है. So the sentence is, I will have written an email. How will you translate this? All right. So ये sentence का translation होगा, मैं email लिख चुका होगा. That is the example of a future perfect tense. Future perfect tense का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपको कोई क्रिया के बारे में बोलनी हो जो आप भविष्य में शुरू तो करोगे बट खत्म भी करोगे. कि मैं लिख चुका होगा, या फिर जैसे आप ये वेबिनार अब देख रहे हो, अगले 10 मिनट में ये वेबिनार खत्म होगी, तो आप तब बोलोगे I will have watched a webinar. मतलब आपका देख के खत्म हो चुका होगा भविष्य में 10 मिनट बाद. So that is how you make sentences in future perfect tense. So इसी तरह बाकी वाक्य भी बनेंगे जो है we, you, they, he, she, it will have written an email. Wasn't that easy, friends? 10 मिनट में हमने पूरे टेंसेस कवर कर लिए हैं. इसी प्रकार आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो. So let's see हमने आज क्या क्या सीखा. There you go. ये पूरी चीज हमने आज सिर्फ 10 मिनट में कवर की है. इसी तरह you can learn tenses. ये चार्ट आप तैयार कर सकते हो खुद के verbs, खुद के क्रिया यूज कर सकते हो. So easy था कि नहीं है? आसान था कि नहीं? Okay. So now that is done, let's move on to the last and the final part of our topic today, that is punctuations. मैं ये शुरू करना चाहूंगा डायरेक्टली मेरे फर्स्ट एग्जांपल से, बिकॉज वो बहुत बढ़िया एग्जांपल है. सो ध्यान से देखना. ओके, फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है लेट अस ईट कॉमा डैडी. मतलब चलो पापा खाना खाते हैं. बट यही सेम शब्द मैं कोई चेंज नहीं करने वाला यहाँ पे. I will take the same words, यही words लूंगा, but punctuation हटा दूंगा. देखते हैं क्या वाक्य बनता है. Oh my God! The sentence becomes, "Let us eat, Daddy." चलो पापा को खाते हैं. This is the power of punctuation. एक छोटा सा कॉमा आपके पिता की जीवन बचा सकता है, आपके डैडी की जान बचा सकती है. So it's very important to use appropriate punctuations in every sentence. क्योंकि पूरा sentence का meaning, पूरे sentence का मतलब सब कुछ change हो जाता है when you do not use the appropriate punctuations. So make sure कि आपके punctuations in place हो. कुछ और examples देखते हैं. Okay.
प्राइवेट, नो स्विमिंग अलाउड, यानी ये प्राइवेट पूल है, यहां पे स्विमिंग अलाउड नहीं है। अब मैं यही शब्द लूंगा और इसे हम बिना पंक्चुएशन चेंज करके देखते हैं क्या बन जाता है। वाओ, प्राइवेट क्वेश्चन मार्क, यानी कोई पूछ रहा है प्राइवेट है क्या? क्या जवाब आया? नो, स्विमिंग इज अलाउड, यानी यहां पे स्विमिंग कर सकते हो। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि सेम सेंटेंस जो यहां पे ये मतलब बता रहा था, यहां आते आते ये मतलब बन जाता है। Again, I want to stress this is the power of a punctuation. And finally, ये थोड़ा controversial statement हो सकता है, but be patient, I have something for you. A woman without her man is nothing. एक औरत उसके पुरुष के अलावा कुछ नहीं है। Isn't this a false statement? क्योंकि आजकल की औरतें they are independent, they are earning for themselves, they are hardworking, सब कुछ कर सकती है जो एक आदमी कर सकता है। सो देखते हैं ये वाक्य में हम पंक्चुएशन डाल के इसको किस तरह घुमा सकते हैं। There you go. I'm sure all the women will be happy to read this sentence. A woman, colon, without her, man is nothing. यानी एक औरत, उनके बिना पुरुष कुछ नहीं है। So I can already hear all the women clapping in their houses, showing your phones to your husbands or your fathers. देखो पापा, देखो तुम, ये देखो क्या लिखा है, सीखो इससे। But yes, punctuation ये भी कर सकता है आपके लिए। So again, my point being, always important to make sure that you use the correct punctuations. And with that, we can see some of the important punctuations, that's period, comma, question mark, exclamation, quotation marks, colon, etc. ये हैं आपके कुछ important punctuations जिसका मतलब जो आप sentences में use कर सकते हैं। And finally, we come to the conclusion. हम खत्म करेंगे हमारे इस टॉपिक को यहाँ पे। तो देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा last 25 minutes में। हमने सीखा आज parts of speech, sentence structure, tenses, and punctuation, all in a matter of 25 minutes. So I hope, friends, आपको भी उतना ही मजा आया हो जितना मुझे। And now, like I promised before, I have some tips for you that you can do and inculcate to improve your grammar. First is read books and newspapers. बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं। आपके पास टाइम नहीं है तो आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन में, इन शॉर्ट्स करके एक मोबाइल ऐप है जहां पे कई जगहों के न्यूज़ सब एक समरी करके वो लिख के देते हैं। तो आप बहुत अलग अलग जगहों से बहुत अलग अलग खबर पढ़ सकते हो। So in shorts is a very good app and I would recommend you all to read it. My second tip would be use online resources. हमारे पास इंटरनेट है, वाईफाई है, इस्तेमाल करो। फोन में कई सारे ऐसे एप्स होते हैं जो आपको ग्रामर इंप्रूव करने में मदद करेंगे। वन ऐप दैट आई फील पर्सनली आपके काम आ सकती है वो है लर्न इंग्लिश ग्रामर रूल्स। यहाँ पे काफी अच्छे से ग्रामर का एक्सप्लेनेशन है, कुछ एक्सरसाइजेस है जो आप सॉल्व कर सकते हो आपके ग्रामर को इंप्रूव करने के लिए। सो दैट इज वन थिंग यू कैन डू। माय नेक्स्ट टिप इज रीड ग्रामर बुक्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो भी बेसिक या एडवांस लर्नर्स है, ग्रामर बुक्स खरीदो। वन ऑफ द ग्रामर बुक्स दैट आई कैन रिकमेंड इज रेमंड मर्फीज एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, अ वेरी गुड बुक फ्रेंड्स। And my next step is pay attention to others while they speak or construct sentences. दूसरे जब बात करते हैं खास तौर पर अच्छे से ध्यान देना। अगर आपके दोस्त नहीं बात करते तो you can always watch TED Talk videos on YouTube. YouTube में TED Talks डालो, कहीं सारे स्पीचेस आपके सामने आएंगे, आप उनको सुनो और देखो वो कैसे बात करते हैं। You will improve definitely. And finally, play word and grammar games. In our class at BM Institute, we have a lot of games and activities that we do to improve your grammar. जैसे हम vocabulary या अंताक्षरी खेलते हैं। एक वर्ड बोलना है आपको, उसके लास्ट लेटर से सामने वाले को एक नया वर्ड बोलना है।
तो इस तरह आप वर्ड बिल्डिंग कर सकते हो या सेंटेंस बिल्डिंग कर सकते हो. So play this with your friends and family whenever you have time, and slowly आप देखोगे कि आपका grammar improve होते जा रहा है. So friends, those were some of my tips that you can use and practice to improve your English grammar. Now, like I promised, you have reached the end, so I have a special offer for you. There is a 25,000 discount on any course for people who are watching this webinar. So you can learn English online. We have online classes, or आप हमारी institute में भी आ सकते हो to learn it from our institute. Some of the courses that we offer are Basic English course, Advanced English course, Business English course, IELTS course, and Train the Trainer course. We have 4 institutes in Mumbai: Thane, Dadar, Andheri, and Borivali. जो भी आपको पास लगता है, you can visit our center. We welcome you all, and we will be waiting for you. And with that, friends, I conclude my topic. I hope you all had a very good time, and I hope I could help you all. Thank you so much, and have a good day ahead. Bye-bye.